गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पीएन पनिकर जी। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने पीएन पनिकर जी का स्टैचू को जो है वो अनवील किया है तिरुवनंतपुरम में। तो पीएन पनिकर जी कौन थे? इनको हम फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट भी कहते हैं। तो आपको पता होगा कि केरला में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, तो उसके लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हम पीएन पनिकर जी का ही मानते हैं। उन्होंने केरला स्टेट लिटरेसी मिशन को जो है वो एक मेजर पुश दिया था। उसी की वजह से यूनिवर्सल लिटरेसी स्टेट में आ चुकी है। ठीक है, अब उनको हम ये इसलिए ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे स्टेट में, केरला में, लाइब्रेरीज एस्टेब्लिश की थी। और उनका वो एक टीचर थे बेसिकली। और उन्होंने एक ग्रुप बनाया था ये नाम है यहाँ पर थिरुविथामकूर ग्रंथासल संघम। ठीक है, इसको त्रवणकोर लाइब्रेरी एसोसिएशन भी बोलते हैं। 1945 में इस ग्रुप को बनाया गया था। और इन्होंने पूरी स्टेट में लाइब्रेरीज़ को फैलाया ताकि लोग पढ़ना सीखें, लोग पढ़ने की आदत लगे लोगों को। तो इसको जो है केरला ग्रंथासल संगम बनाया गया। जब जो है केरला स्टेट बनी 1956 में, तब इसको केरला ग्रंथासल संगम बना दिया गया। ठीक है, अब जब स्टेट गवर्नमेंट ने इसको ओवरटेक करके केरला स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल बना दिया। और इसी केरला ग्रंथासल संगम का नाम जो था का जो मोटो था, जो एक स्लोगन था, वो था रीड एंड ग्रो। ठीक है, तो केरला लिटरेसी मिशन जो है उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग और एजुकेशन जो है वो प्रमोट किया। यही ग्रंथासल संगम है जिनको यूनेस्को द्वारा 1985 में क्रुप्सक्या अवार्ड भी मिला। और ये इन्होंने कैनफेड भी बनाया, केरला एसोसिएशन फॉर नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ताकि रूरल एरियाज़ में भी एजुकेशन को पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो इन्हीं की डेथ एनिवर्सरी है जून 19। उसी के दिन जो है हम जो है रीडिंग डे भी सेलिब्रेट करते हैं। पहले सिर्फ स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता था, बट नेशनल लेवल पर उसको सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल रीडिंग डे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिद्धा डे। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है उन्होंने सिद्धा डे को जो है वो भी सेलिब्रेट किया है 23 दिसंबर को, रादर कल। और ये अगत्यार जो हैं, जो ऋषि थे जिन्होंने सिद्धा जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन को बनाया था, वो उनके ही बर्थडे पर जो है सेलिब्रेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा। तो ये 5th टाइम हमने सेलिब्रेट किया है सिद्धा डे। और ये स्ट्रेंथ ऑफ सिद्धा मेडिसिन जो है फॉर कम्युनिकेबल डिसीजेस, उसके लिए ये इस बार का थीम था। ठीक है, तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा और गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने मिलकर इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया है। और सिद्धा हमारा एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशंस ऑफ हेल्थ केयर है, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ही ओरिजिनेट हुआ है। इसमें पंचभूतम जो है वो उस पर फोकस होता है, टेस्ट पर, ह्यूमर्स पर। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह से जो है हमारा एक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये। ठीक है, तो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है। और हमारे जो हैं महर्षि श्री अगत्यार जी, उनका इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए हम इनके बर्थडे पर इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो वैदिक ऋषि थे महर्षि श्री अगत्यार जी। और इन्होंने वैदिक रिलीजन बहुत फैलाया था सदर्न इंडिया में। वन ऑफ द 7 ग्रेट सेजेस भी कहते हैं हम इन्हें। और ये लीडर रहे हैं सिद्धा जो आपके सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। इनको कुरुमुनि भी कहा जाता है। तो इन्होंने सिद्धा और एस्ट्रोलॉजी दोनों में ही बहुत ज़्यादा जो है वो अपना योगदान दिया है। कहा जाता है कि ये 5000 साल तक जीवित रहे थे। और थेरायर और थोल्कापियर, ये दोनों तो आपको पता ही हैं, बहुत फेमस हैं। और ये दोनों जो हैं वो महर्षि श्री अगत्यार के ही डिसाइपल्स थे। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है असिग्मा। तो इंडियन आर्मी जो है उसने अभी रिसेंटली असिग्मा, एक आप जैसे समझ सकते हो व्हाट्सएप है जैसे आपका, वैसे ही एक मैसेजिंग एप्लीकेशन जो है वो बनाया है। और ये इन हाउस बनाया गया है। इसको कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स ऑफ द आर्मी ने बनाया है। ठीक है, अब ये आर्मी के इंटरनल नेटवर्क पर चलेगा। इससे पहले आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क मैसेजिंग एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता था। अब आपको पता है व्हाट्सएप का यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही अनसिक्योर है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट अदर जो आर्मी है उन्होंने अपने लिए खुद के लिए एक अपना इन हाउस मैसेजिंग एप्लीकेशन बनाया हुआ है। और ये हमारी फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए इंडियन आर्मी की, उसको देखकर ही बनाया गया है। ठीक है, मल्टी लेवल सिक्योरिटी है इसमें, मैसेज प्रायोरिटाइजेशन, ट्रैकिंग और ग्लोबल एड्रेस बुक जैसे डायनामिक फीचर्स इसमें डाले गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है कर्नाटका का एंटी कन्वर्जन बिल। तो कर्नाटका असेंबली में कर्नाटका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल जो है वो पास किया गया है। अब ये बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा बिफोर गेटिंग दी असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आई एम सॉरी, गवर्नर। तो ये बिल जो है ये एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्जन को प्रोहिबिट करता है, अगर वो कन्वर्जन मिस रिप्रेजेंटेशन, धोखे से, फ्रॉड करके, या कोई अल्योरमेंट दे के, या मैरिज के वादे से जो है वो की गई हो।
लेकिन इसमें एक्सेप्शन दी गई है कि अगर कोई पर्सन अपने पिछले प्रीवियस इमीडिएट प्रीवियस जो है रिलीजन में वापस जाना चाहता है तो वो जा सकता है, उसमें ये बिल के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे, ठीक है। अब कौन कंप्लेंट कर सकता है इस केस में? अगर किसी पर्सन के कन्वर्जन किया जा रहा है उसको धोखा देकर या कोई अल्योरमेंट देकर, तो उसका फैमिली मेम्बर या कोई उससे रिलेटेड इंडिविजुअल जो है वो कंप्लेंट कर सकता है। पनिशमेंट इसमें 3 से 5 साल की रखी गई है और 25,000 तक का जुर्माना रखा गया है। लेकिन अगर माइनर विमेन या पर्सनस फ्रॉम SC ST कम्युनिटी को कन्वर्ट किया जा रहा है फोर्सफुली या अल्योरमेंट देके, तो उसमें जेल टर्म जो है वो 3 से 10 साल तक का रखा गया और 50,000 तक का फाइन रखा गया है। अब इसमें ये भी कहा गया है कि जो पर्सन ऐसे इसमें कन्वर्जन में पकड़ा जाता है तो उसको पेमेंट भी करनी है, कंपनसेशन भी देनी है। 5 लाख तक की कंपनसेशन वो हो सकती है, विक्टिम्स ऑफ कन्वर्जन को कंपनसेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें मैरिजेज अगर आपने कर ली है, मतलब किसी ने रिलीजन सिर्फ कन्वर्शन कराने के लिए मैरिज किया है, तो उस मैरिज को जो है वो नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। और कन्वर्जन ये ऐसी धोखाधड़ी वाली कन्वर्जन जो है उसको कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया गया है, ठीक है। तो अब फिर अगर कोई सच में कन्वर्ट होना चाहता है तो वो कैसे कन्वर्ट हो सकता है, तो उसके लिए भी प्रोविज़न बताए गए हैं, ठीक है। तो उसमें कहा है कि पहले आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 2 महीने पहले लिख कर देना पड़ेगा। 1 महीने पहले का नोटिस वो पर्सन देगा जो कन्वर्ट करना चाहता है। फिर एक इंक्वायरी करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कहने पर पुलिस वाले, और वो इंक्वायरी के बेसिस पर ही जो है वो परमिशन दी जाएगी कि हाँ ये कन्वर्जन सही है या नहीं है, ठीक है। अब इसमें ये भी कहा गया है कि जब पर्सन कन्वर्ट हो जाता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसे बताना पड़ेगा कि हाँ वो कन्वर्ट हो गया और खुद वो विलफुली कन्वर्ट हुआ, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो रेवेन्यू अथॉरिटी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी, बैकवर्ड क्लासेज, इन सारे डिपार्टमेंट्स को जो है इन्फॉर्म करेगा, ताकि वो ये देख सके कि क्या पर्सन जो है वो उसकी कोई एंटाइटलमेंट्स हैं, क्या उसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके बाद कन्फर्म की जाएंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है पर्सनल लॉज इन मैरिज। तो एक बिल ऐसा पास किया गया है पार्लियामेंट में, रादर लोकसभा में भी सिर्फ, और उसमें विमेन की एज ऑफ मैरिज को इंक्रीज़ करने का जो है वो प्रोविज़न है 21 साल का। हमने डिस्कस किया ही है ऑलरेडी इसको। तो अब इसमें ये कैसे किया जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 जो है उसको अमेंडमेंट की जा रही है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि आपने किया क्या है इसको, ताकि सारे रिलीजन्स को कवर कर सकें हम, तो आपने क्या किया कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है उसी को ही अमेंड कर दिया। उसका अंदर जो डेफिनेशन थी चाइल्ड की उसको बदल कर ही ये कर दिया कि चाइल्ड वो है जो कि मेल या फीमेल है और उसकी 20 साल तक की एज नहीं हुई है, ठीक है। तो अब इसको जानबूझकर ये किया जा रहा है ताकि इसको जेंडर न्यूट्रल भी बनाया जा सके और जो है एक तरह से सेक्युलर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई रिलीजन का बेसिस नहीं है, ठीक है। अब इसमें अगर किसी चाइल्ड की मैरिज, अब आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस ऐसे इलीगल नहीं हैं, लेकिन अगर समझ लो आपकी 18, अभी जो हम एज के हिसाब से सोचें कि 18 साल जो है वो गर्ल्स की और 21 साल मैन की या बॉयज़ की, अगर उससे नीचे आपकी एज में अगर शादी हो जाती है तो आप जो है वो कंप्लेंट कर सकते हो कि मेरी ज़बरदस्ती शादी कर दी गई है। तो उस केस में उस शादी को नल एंड वॉइड माना जाएगा, ये करार कर दिया जाएगा कोर्ट द्वारा, और वो शादी जो है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंप्लेंट नहीं करता है तो फिर वो मैरिज पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में, ठीक है। लेकिन अब इसमें प्रोविज़न ये लाया गया है, तो ऑफ कोर्स कंप्लेंट आप कब तक कर सकते थे, तो पहले जो है एक्ट वो ये कहता है, अभी जो एग्जिस्टिंग एक्ट है मतलब रादर, कि 2 साल, मतलब आपकी 18 साल की अगर एज विमेन की है तो उसको एक्स्ट्रा 2 साल, मतलब 20 साल की एज तक। मैरिज समझ लो उसकी 17 साल में हुई, ठीक है, किसी लेडी की, मतलब गर्ल की, तो उसको 3 साल की विंडो होगी, क्योंकि 1 साल तो उसकी 18 साल तक वो एज पहुंचेगी, और 18 साल से 2 साल की एज, मतलब मैक्सिमम 20 ईयर्स उसके पास टाइम है कि वो तब तक कंप्लेंट कर सकती है कि ये मैरिज मेरे से ज़बरदस्ती करवाई गई है। सेम जो है वो मैन के केस में क्या होगा, 21 साल है तो 21 साल प्लस 2 ईयर्स मतलब 23 ईयर्स तक वो कंप्लेंट कर सकता है कि उसकी मैरिज जो है वो विलफुल नहीं थी और उसके साथ जो है वो मतलब चाइल्ड मैरिज करवाई गई है, ठीक है। सो अब लेकिन इसमें अमेंडमेंट करके कहा जा रहा है कि दोनों की 5-5 साल जो है वो बढ़ाई जा रही है एज ऑफ मेजॉरिटी के बाद से, ठीक है। तो अब एज ऑफ मेचोरिटी तो आपको सबको ही पता है कि 18 साल है, ठीक है। 18 साल वो मैन के लिए भी है और
विमेन के लिए भी। तो 18 साल में अगर हम 5 साल ऐड कर दें तो वो 23 साल बन जाता है। तो अब मतलब मैन और विमेन दोनों ही 23 साल की एज तक बता सकते हैं कि उनकी मैरिज जो है वो सही थी या नहीं थी, या वो चाइल्ड मैरिज थी, वो कंप्लेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इस विंडो को भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। फिर इसके बाद जो है ये भी प्रोपोज़ल है कि अ, सारे रिलीजन के ऊपर ये एक्ट जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो क्या ऐसा कोई पहले एक्ट आया है जो कि सारे रिलीजन के ऊपर जो है वो वैलिड था? तो 2006 का जो ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, ये एक स्पेशल लेजिस्लेशन है। इसको एक जनरल लॉ की तरह लेके आया गया था। इसमें कोई ऐसा नहीं कहा था कि मुस्लिम्स के ऊपर नहीं लगेगा, क्रिश्चियंस के ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन इसमें जो है लकूना ये था कि ये नहीं बताया कि ये एक्ट जो है वो एग्जिस्टिंग बाकी जो एक्ट हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ या क्रिश्चियनिटी के लिए अलग जो एक्ट हैं उनके ऊपर जो ये सुपरसीड करेगा, ठीक है। तो ये बताया ही नहीं। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पर्सनल लॉज थे वो इससे ऊपर ही रहे, ठीक है। तो मुस्लिम्स में आपको पता है कि प्यूबर्टी का कंसेप्ट है कि मतलब अगर प्यूबर्टी आ गई है तो मैरिज की जा सकती है। तो लीगली जो है प्यूबर्टी की एज हम 15 साल मानते हैं। तो मतलब 15 साल से ऊपर की अगर किसी लेडी गर्ल की मैरिज की गई है तो उसको जो है वो वैलिड माना जाता है, ठीक है। जबकि वो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में जो है वो लीगल नहीं है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसके तहत वो लीगल माना जाता है, ठीक है। लेकिन अब जो है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और रीज़न जो है जो इस बिल का वो कह रहा है कि अब हम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को जो है वो हम अमेंड करेंगे, और सारे जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उन सबको ये ओवरराइड करेगा। अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट आ रहा है, समझ लो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में और किसी और एक्ट में कन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है इसके प्रोविजंस जो है वो वैलिड माने जाएंगे, ठीक है। तो क्या कभी पहले ऐसा लॉ बना है इंडिया में जो कि पर्सनल लॉज को ओवरराइड कर रहा हो? ऑफ कोर्स यस। शबाना बानो इमरान खान के जो केस था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर मुस्लिम वुमेन को जो है सेक्शन 125 जो सीपीसी है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके अंदर ऑलरेडी ये प्रोविज़न है। तो मुस्लिम वुमेन को भी जो है राइट टू मेंटेनेंस है आफ्टर डाइवोर्स और इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इद्दत, ठीक है। तो अभी तक पहले क्या होता था इस एक्ट से पहले कि अगर इद्दत जो है, मोर्निंग पीरियड जो है वो एक्सपायर हो गया तो विमेन जो है वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती थी हस्बैंड से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा कुछ नहीं है। सेक्शन 125 एक्ट जो है वो सीपीसी का ये कहता है कि आप इवन एक्सपायरी ऑफ द इद्दत के बाद भी जो है वो आप मेंटेनेंस जो है वो क्लेम कर सकते हो हस्बैंड से, ठीक है। 1996 में जो है केरला हाई कोर्ट ने के साथ एग्री करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चर्च जो है वो सेकंड मैरिज नहीं करवा सकता जब तक कोई भी कोर्ट ने फर्स्ट मैरिज जो है वो क्रिश्चियन कपल्स के बीच में जो है वो उसको वाइड ना किया हो, ठीक है। तो उन्होंने एक तरह से चर्च की पावर्स को जो है वो ओवर रूल कर दिया इस केस में। फिर शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तो बहुत लेटेस्ट केस है, ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। फिर 1960 का भी एक एक्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम लॉ जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का वो नहीं लागू होगा इंडिया में। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 वो एक सेकुलर लॉ, सबके ऊपर वही लागू होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है वर्नैक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम। तो अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने मिलकर एक इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, वर्नैक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम। इसके अंदर होगा क्या कि जितने भी इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में उनको अभी तक क्या होता है कि उनको सारी इनोवेशन इकोसिस्टम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सिर्फ इंग्लिश में मिलती है। बट अब इसमें क्या किया जा रहा है कि 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस जो हैं इंडियन गवर्नमेंट की उसमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी उन्हें, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने एक वर्नैक्युलर टास्क फोर्स बनाई है अटल इनोवेशन मिशन ने, और बहुत सारे लैंग्वेज टीचर्स, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, टेक्निकल राइटर्स, इन सबको जो है वो रोप इन करेगी ये टास्क फोर्स, और ट्रेनिंग कराएगी उनकी, ताकि जो है ट्रेनर की ट्रेनिंग कराएंगे ताकि वो जो ट्रेनर्स हैं वो इन सब जो एंटरप्रेन्योर्स को जो है वो ट्रेनिंग दे सके अलग अलग लैंग्वेजेस में, उनको जो है वो इनोवेशन इकोसिस्टम के बारे में बता सके, ठीक है। अब इसमें इंडस्ट्री मेंटर्स भी आगे आए हैं, उन्होंने भी कहा है कि हाँ ये प्रोग्राम अच्छा है, उन्होंने उसके अंदर को सपोर्ट करने की बात की है। इवन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले स्पॉन्सर्स जो हैं वो भी कह रहे हैं कि हम भी इसमें जो है वो अपने फंड्स लगाएंगे, ठीक है, इस प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे। तो इस प्रोग्राम की क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि ऑलमोस्ट सिर्फ 10.4% जो है इंडियंस वो इंग्लिश बोलते हैं, और वो भी उन उन इसमें भी जो है वो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी सेकंड, थर्ड या फोर्थ लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। तो मतलब सिर्फ 0.02% ऑफ इंडियंस जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को बोलते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हमारी जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में जो है वो कम्युनिकेट करती है। तो इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम उनकी भी जो है
उनकी भी जो नीड्स हैं उसको हम देखें, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is P.N. Panikarji. Okay, so President of India has recently unveiled a statue of P.N. Panikarji at Thiruvananthapuram. So who was P.N. Panikarji? So he was the father of library movement in Kerala. So he is known for his contributions to promote literacy in the state of Kerala. He was instrumental in giving a push to Kerala State Literacy Mission, which of course led to the universalization of literacy in the state of Kerala. And he helped in establishment of libraries across the state, and he single-handedly transformed the literacy landscape. So he was born in Jamjamun in 1901, but he grew up to become a teacher, and his influence on society as a teacher was much greater than many of his peers. And he initiated a movement or a formation called Vithamkur Granthasal Sangam in 1945, and it was also known as Travancore Library Association. So you know that at that time there was no state of Kerala. Travancore was the area of that location. So that's why he founded this Travancore Library Association. Only after the Kerala state was established in 1956, this Kerala Granthasal Sangam was established, or the Travancore Library Association was transformed into Kerala Granthasal Sangam, and its slogan was "Read and Grow." Okay, so after that, the state government took over his Kerala. Granthasal Sangam and made it the Kerala State Library Council. Okay, so PN Panikarji was also instrumental in promoting importance of reading education. His Granthasal Sangam also won this Krupsake Award from UNESCO in 1985. He developed this Kerala Association for Non-Formal Education and Development, so that importance of education in rural areas can also be established. So when he passed away in June 19, 1995, the state government decided that to honor his legacy, Reading Day would be celebrated on his death anniversary every year. But of course, at the national level also, we celebrate this National Reading Day on his death anniversary, that is on June 19th. Okay, so now let us see the next topic, which is Siddha Day. So Ministry of Ayush has recently celebrated Siddha Day on the birth anniversary of Agathiar. So he was a Maharishi. So this is the fifth Siddha Day, and the focus is on strength of Siddha medicine for communicable diseases. And this day was jointly organized by Central Council for Research in Siddha, National Institute of Siddha, and Directorate of Indian Medicine and Homeopathy of Government of India. Okay, so Siddha is basically one of the oldest codified traditions of healthcare, which originated in the Indian subcontinent. So it works on the principle of Panchbhutam, and it is still practiced in some parts of South India, especially in the state of Tamil Nadu. So the term Siddha here means Siddhi, that means achievement. So Siddhars who practice this form of medicine, they have achieved supreme knowledge in the field of medicine, yoga, or meditation. Okay, so about Maharishi Sri Agathyar ji, so he was a Vedic rishi, and he was instrumental in the spreading of Vedic religion in southern India. He was also one of the seven great sages, and he was the leader of all Siddhas. Okay, so he was also known as Kuru Muni, and uh, his contributions to the field of medicine, that is of Siddha, and astrology is immense. He is said to have lived for about 5,000 years, and two of his disciples, they are very famous, Therayar and Tholkapiar. Okay, so now let us see the next topic, which is Asigma. So Asigma is basically a message application, an in-house message application, which has been developed by the Indian Army. So it has been developed in-house and by a team of officers of Corps of Signals of the Indian Army. So earlier the Army was using this AVAN, that is the Army Wide Area Network message application, but now it has been replaced with a Sigma. So it has been designed to meet the futuristic requirements of the Indian Army. So its features contemporarily involve multi-level security, message prioritization and tracking, and even a dynamic global address book. Okay, so
Now let us see the next topic, which is Karnataka's anti-conversion bill. So the Karnataka Legislative Assembly has passed this bill, and it aims to prohibit conversion from one religion to another if that conversion is being done by misrepresentation, force, fraud, allurement, or any marriage. Okay, so of course there is one exception here. If someone wants to go back to his immediate previous religion, then it is allowed. Okay, so who can file the complaint on behalf of the person who is being converted into some another religion? So any family member of that victim or any person who is related to that individual can file a complaint. So what is the punishment? So a jail term of 3 to 5 years has been envisaged, and a fine of about 25,000 is also there. But in case you someone is converting minors, women or persons from SC/ST community, then the jail term would be 3 to 10 years, and a fine of rupees 50,000 would be there. Okay, so it also has this payment of compensation for victims by the alleged people who are converting these victims. So a compensation of 5 lakh rupees has been made. uh, uh, on Of course it would be given only after the court orders. And marriages which are conducted only with the intention to convert the other person into another religion, those marriages would be declared null and void. So what if someone wants to willfully convert into another religion? In that case, the person would the who wants to get converted would have to notify the district magistrate 2 months in advance at least. And this person must give the person who is going to convert that person must give at least 1 month notice to the district magistrate. And the district magistrate would have to conduct an inquiry through the police to see the real purpose of this conversion. And after the conversion takes place, the person who has converted has to inform the district magistrate of his conversion within 30 days. Okay, so after that, the district magistrate would inform the revenue authorities and other government departments so as to see if the person who has converted remains entitled to the benefits of the government or any such as reservation. Okay, so now let us see the next topic, which is personal laws in marriage. So you know that the government has decided to amend the Prohibition of Child Marriage Act 2006 so that the uh, minimum age of marriage can be increased. So, what are the amendments which have been proposed in this particular bill? So, first of all, the government is basically changing the definition of a child. Okay, so the under this Prohibition of Child Marriage Act, the new definition would be a male or female who has not completed 21 years of age. So, it would mean that this definition of a child would be made gender neutral. Okay, so currently it is about 18 years for women and 21 years for men, but now it would be made gender neutral, and 21 years of age would be applicable for both men and women. So the secondly, it also increases the window for a child to file a petition in case the child feels that he has been forced into a marriage. So earlier the provision was that the person can file a complaint from the date of his marriage and plus 2 years from until he or she attains majority, the age of majority, that is 18 years in case of women and 21 years in case of men. So for women, they had this window of until about 20 years of age, and for men this window was there until 23 years of their age. But now the government has proposed to amend this bill so that the window for both men and women will be increased by 18 years by fifth I'm sorry by 5 years. So that would mean that that would mean the age of majority for both women. So I'm sorry, the so it means the window for this child to file a petition would be now 18 plus 5, that is 23. And for men would also be 18 plus 5, because the age of majority is 18 years in India. Okay, don't confuse it
don't confuse the age of majority with the minimum age of marriage. They are two separate things. So in this particular case, the government has extended this window for both men and women to 5 years after attaining the majority age, which is 18 years. So this has also been made gender neutral. So the government has also proposed that there will be this Prohibition of Child Marriage Act would be applicable across all religions. Okay, so currently what is the status of this act is that in 2006, when this law was considered, this law was enacted, it was considered special, but it was silent. There was a lacuna in this law, that it was silent in the case if that this law comes into conflict with another law, if this Prohibition of Child Marriage Act would win, or the other law would be applicable in that case. Okay, so what happened in this case is that the Muslim personal law already recognizes attaining puberty, and puberty age is legally assumed to be 15 years of age. So even if the Prohibition of Child Marriage Act provisions were not allowing a person under 18 years of age, or in case of men 21 years of age, to get married, but Muslim law or Muslim personal law trumped the provisions of Prohibition of Child Marriage Act. So the Child Marriage Act was not applicable to Muslims at that time. Okay, but now the statement of objects and reasons are saying that this Prohibition of Marriage Child Marriage Act would be amended so that it would trump all other laws, even if they are any personal laws of any religion. So that would also make it secular or it would be a direction. It would be a step in the direction of uniform civil code. Okay, so has there been any case where any law has overridden a personal law? Of course, there are several instances, like in Shabana Bano versus Imran Khan case of 2009. Supreme Court ordered that yeah, a Muslim woman is entitled to claim the maintenance as per the section 125 of the Criminal Procedure Code, even after the expiry of iddat period. But in Muslim personal law, this was not applicable. A woman could not claim uh, maintenance after the expiry of iddat, but Supreme Court overturned that decision, and they said that section 125 would be applicable. In 1996, the Supreme Court upheld the Kerala High Court decision and said that the church cannot solemnize the second marriage of a person until the first marriage of the person has been dissolved by the court. So in nutshell, it took away the powers of the church to solemnize a second marriage without the first being dissolved by the honorable court. Okay, so you know about the Shaira Bano versus Union of India case of 2017. It made this triple talaq unconstitutional, and in 1960 also the Supreme Court said that Transfer of Property Act 1882 provisions would apply to over Muslim law on transfer of property. So now let us see the next topic, which is vernacular innovation program. So Atal Innovation Mission and Niti Aayog have partnered with each other so as to come up with this program, vernacular innovation program. So it will enable innovators and entrepreneurs in India to have access to innovation ecosystem in 22 scheduled languages of India. And for that they have identified and they have formed a vernacular task force, which will be comprising of several vernacular language teachers, subject experts, technical writers, etc. And they would be training the trainers who would in turn train the entrepreneurs and innovators in their respective areas, and they would basically train them so that they would get so that the innovators and entrepreneurs would get to know about the innovative ecosystem that the government has created for these new entrepreneurs. Okay, so even the industry mentors have joined their hands because they think that this program is good, as diversifying
language is being appreciated, and CSR sponsors, so corporate social responsibility sponsors, are also saying that they are ready to generously support this program. So what is the need of this platform? So basically, you know that almost just about 10% of people speak English, and in this 10% there are certain people, there are more people who have English as their second, third, or fourth language, and surprisingly just 0.02% people in India speak English as their first language. So about 90% of our population remained outside the ambit of this innovation ecosystem, which has led to an economic boom in India. So that's why the government has decided that we should also support the vernacular languages in creating a talent pool. Okay, so these were our topics for today. So आज आपके टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो हमने वीकली करंट अफेयर्स भी शेयर किए हैं, सो उसको डाउनलोड कर लेना. वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स. अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.